वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पल्लवी परमार जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। Hello everyone. Thank you very much for this. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। You're welcome. It's been a pleasure to be here. सेम ईयर टू मैम। तो मैम, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, वैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस टॉपिक से पहले मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी लिटिगेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगी, यानी कि जो अब तक आपका लिटिगेशन जर्नी है और जो अब तक के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ड्यूरिंग द लिटिगेशंस, क्या प्लस और क्या माइनस रहा उसके बारे में जानना चाहेंगी। सो फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द योर लिटिगेशन जर्नी। Thank you very much. Actually, yes, litigation journey can be the story of inspiration for lots of upcoming lawyers. So my litigation journey started in the year 2000 when I joined Supreme Court after my doing my LLB. So being a law student, I did not know much about the legal practice, and I straightforward joined Supreme Court. And I saw the Supreme Court judges, High Court judges, and the court decorum, and the practice and procedure of the highest court. So from there, I saw the power of the court, which inspired and which created interest in the profession. So I started my journey from Supreme Court, and I started the work of the appellate courts, the highest appellate courts, and the writ jurisdiction of the courts. So from there, I understood that the what is the constitutional power of the court. For any lawyer to start a journey, they should know what all different kind of courts are there, and what all kind of powers are there, and how do we derive our remedy from those courts. So that is how it was relevant. And these days, the law students are much more informed than what we were. So they know what courts they practice into and what kind of matters they want to do into. After doing the Supreme Court work, I came to High Court and then to district courts and corporate work in the course of 10 years from 2000 to 2010. Like I joined profession in 2000 and then till 2010, I did all these kind of work, corporate work before the उस समय company law board होता था. So before company law board, we did some corporate matters of operation mismanagement, then some arbitration matters, and some civil suits and some matrimonial jurisdiction. क्योंकि उस समय there used to be only three kind of litigation: civil, corporate, and the civil, corporate, arbitration, and criminal. So criminal में मेरा interest नहीं था. So I was doing civil, corporate, and arbitrations. Then from 2011-12 onwards, I did some investment laws. 2014 onwards, law was still progressing. With each passing year, law was still progressing. 2010-11, we saw lots of new changes in the law. Lots of new branches started developing, like the with the advent of internet. So we saw the cyber law, and we saw the IPR developing with the advent of the internet and advent of the interstate disputes between the companies and the parties. And then subsequently, I started off my own practice. Till that time, till 2012, I was working with companies and the law firms as a lawyer. 2014, I started my own law office from where I was doing my own work. So miscellaneous works in High Court, Supreme Court, arbitration, and National Consumer Commission. This kind of work I was doing, and I was advising these startups also. Uh, then between 2015 to 2020, there were still more laws were notified. The new company law was notified in 2013, which brought about lots of new changes in the company law domain. And they introduced lots of new laws due to which they increased the liabilities and responsibilities of the directors. And it became difficult to run the shelf companies, and the company notified the insolvency code in 2016, which made the which um, replaced the previous BIFER Act. BIFER used to be the Board for Industrial and Financial Reconstruction for SIC companies. Like previously, the government used to have a mechanism to revive the SIC companies through giving them the package. So that was replaced by the
insolvency code. So there was a practice of separate codes under the insolvency board. So between 2016 to 2020, there were so many laws like we had the technology laws, we had the media and entertainment laws, then we had the cyber laws, robotics laws. So many new law streams have come into play, and now the legal profession is interplay of different kind of legal streams. So unless you know the nuances of all parts, all aspects of the laws, it will be difficult to practice. So, in the meanwhile, I updated my legal practice to all these sectors also, from the civil, corporate, consumer, constitutional to now we advent into uh, technology law, media and entertainment law, insolvency law, and the impact of all these laws on the constitutional rights of the people, like the if Twitter blocks somebody. So can we say that it is an infringement of fundamental right of a person because Twitter is a private body? And similarly, now when we are saying that WhatsApp is having a privacy policy, so is it an infringement of the fundamental right, or is it a competition matter? So there is an interplay of different rights of the persons, the citizens, the government, obligation of the government to keep a check. So there are so many different rights and obligations, and wherein government is notifying so many new laws and regulations every day to control these new technology instruments. So that's how it's a very interesting space to play with and to explore and experiment and gain out of it. So we all are in the stage of evolution for now, but yes, we are learning with the phase, and we are developing law, and we are learning from the precedents which Supreme Court is setting. So that's how my journey had been from a litigation lawyer in two, three sectors to now having couple of areas of practice and playing with all those areas of field and experimenting and devising new laws on the in the process. So that's how it has been. Thank you for the Definitely, opportunity. ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Definitely, Yeah. hard work always pays to you, and it seems you are quite, the learner advocate. So, मैम आज का जो हमारा टॉपिक है, which is Yeah. NCLT, नेशनल Yeah. कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि काफी अपने Yeah. आप में बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इन दीज डेज काफी सारे लिटिगेशंस जो है इसमें अभी जो है प्लस में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज एनसीएलटी, ये एनसीएलटी क्या है? So when I said the company at 2013 has been notified, so 2013 से पहले there used to be a special company court called Company Law Board, where the various matters falling into the Companies Act jurisdiction used to be filed, like the operation mismanagement and the disputes between the directors and all the matters which pertain to the companies. That was the one to court. And then there used to be a company court in High Court where the winding up petitions used to be filed. So there was a overlapping of jurisdiction between the company law court and the company court of the High Court. So what government has done, government has combined the jurisdiction of both the courts into single court, and now they have formed the National Company Law Tribunals. The National Company Law Tribunals are the quasi judicial body which take care of all the company law matters with respect to the winding up, which is now called as insolvency petitions, and the inter se director disputes, shareholder disputes, or any other disputes which pertain to the company matters. So, and we have the NCLT in all the major states, and the principal bench of the NCLT is at Delhi. And there is a appellate jurisdiction of NCLT also, which is called a National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT. NCLAT is having, it used to have one bench at Delhi only. Now they have a Chennai bench also, which is working through VC mode. Hope that clarifies about the NCLT and NCLAT.
It's very good, ma'am. So, ma'am, what is the concept of insolvency? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या है? या इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि जैसे अब कंपनीज हैं, कंपनीज के ड्यूज होते हैं, तो अब कंपनीज के फंक्शनिंग में कंपनीज अपना सारा फंड नहीं लगाती हैं। कुछ फंड वो अपना इन्वेस्ट करती हैं विच इज कॉल्ड ए कैपिटल। कुछ फंड्स वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, उनके सप्लायर्स होते हैं। तो अब मान लीजिए कंपनी ने किसी भी क्रेडिटर का पैसा नहीं वापस किया, तो कोई भी क्रेडिटर, सिक्योर्ड, इनसिक्योर्ड या फिर ऑपरेशनल, तो वो जाके कंपनी लॉ, इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में जाके सेक्शन 7 में पिटिशन फाइल कर सकते हैं अ, कि हमारा जो है इतना मनी ड्यू था और वो इस कंपनी ने वापस नहीं किया, तो इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले उस कंपनी को, जिसको कि हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेटर को एक नोटिस देना होता है, ये कहते हुए कि हमारा इतना ड्यू है और आपको वो वापस करना है। अगर वो वापस, और उसके लिए एक डिफाइंड टाइम लिमिट होता है, उस डिफाइंड टाइम लिमिट में अगर वो पैसा वापस नहीं करते और या रिप्लाई नहीं करते, तो उसके बाद फिर आप कंप्लेंट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो या फिर लेकिन अगर डिस्प्यूट कर दिया कि सपोज इतना ड्यूज नहीं है, देन दे कैन नॉट गो फॉर द इंसॉल्वेंसी पिटिशन। ये हुआ secured creditor की कैटेगरी में। एंड देन देयर इज द कैटेगरी ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जैसे कि जो सप्लायर्स होते हैं, या फिर वो कंपनी जिन्होंने उस कंपनी के लिए काम किया, जैसे प्लम, जैसे लाइक किसी कंपनी ने इलेक्ट्रिक वर्क किया या फिर एचआर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो दे आर दी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होने के लिए आपका ड्यूज दे शुड बी minimum of 1 crore of due to file the insolvency petition. Then only they can go in for the insolvency petition. Insolvency petition फाइल करने के टाइम पे अब गवर्नमेंट हैज defined a class of the professionals called the IRPs, that is the insolvency resolution professionals. They are the professionals जिनको की जिन्होंने इंसॉल्वेंसी का एग्जाम पास किया है, और दे आर ट्रेन टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी मैटर्स, और उनको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो वेन एवर एनी इंसॉल्वेंसी पिटिशन इज फाइल्ड, द पर्सन हैज टू file a letter from the insolvency professional indicating his consent to be the IRP for that company. तो इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल होने के बाद एनसीएलटी उनको नोटिस इशू कर देती है, और इशू होने के बाद कॉर्पोरेट डेटर अगर आगे एक्सप्लेन करता है कि देयर इज नो डेट, और डेट है तो वो सेटल करना चाहता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स द कोर्ट में डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। दैट्स हाउ इट इज। ओके मैम। सो मैम, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है? सॉरी, ऑपरेशनल जो रेजोल्यूशन प्लान जो होता है, रेजोल्यूशन प्लान जो है अपना, विच इज आई कैन से दैट, वो क्या है? ऑपरेशनल जैसे अब दो कैटेगरीज है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो वो होते हैं जिन्होंने कंपनी के एसेट्स पे अपना चार्ज क्रिएट किया हुआ है, इसका मतलब कि इनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अब लेकिन जो बेचारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, उनका कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, तो उनके पास में कोई राइट भी नहीं है, और 1 करोड़ से कम की पेमेंट होने पे वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इसलिए उनका राइट का ध्यान रखने के लिए कुछ उनके पास रेमेडीज हैं। अब जैसे इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद कोर्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म कर देती है, जिसे कि हम सीओसी कहते हैं। तो अब सीओसी में भी सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहते हैं, उसमें भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब जो रेजोल्यूशन प्रोसेस बन रहा है, किसको कितना पैसा मिलेगा या फिर कंपनी को बाहर कैसे निकालेंगे इंसॉल्वेंसी में, तो उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की का कोई रोल नहीं होता, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका कोई से भी नहीं होता। तो दे आर एट अ वेरी डिसएडवांटेजियस पोजिशन। तो दैट्स व्हाई उनके लिए कुछ रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं। अब सपोज रेजोल्यूशन प्लान बन के आया और वो नोटिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए कोर्ट में आया, तो में कोर्ट ने पास कर दिया, और उसके बाद भी अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को उनका पैसा नहीं मिलता, तो देन दे कैन कम टू द कोर्ट under section 31 and 30 of the insolvency code for seeking a
judicial review of the resolution process, saying that interest of सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका इंटरेस्ट बैलेंस नहीं हुआ है। तो एक छोटी सी पावर है, कोर्ट ये कहता है कि अगर आप रेजोल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें सारे पार्टिसिपेटिंग पार्टीज को उनके राइट को प्रोटेक्ट एंड सिक्योर करना चाहिए। किसी भी पार्टी का अगर राइट सिक्योर नहीं हुआ तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू में आप जाके कोर्ट को कह सकते हैं, एंड देन कोर्ट विल लुक इनटू दिस मैटर एंड दे विल जस्ट ट्राई टू बैलेंस द इक्विटीज। तो उनके पास एक ये रेमेडी हो सकती है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि जितने बड़े बड़े क्रेडिटर्स हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है तो उनकी बात तो सुनी जाती है, बट जो छोटे जैसे कि जिनका वन वन 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की लाइबिलिटीज हैं तो उनको वो इग्नोर कर देते हैं। बट किसी भी छोटी कंपनी के लिए 1 करोड़ से 5 करोड़ भी बहुत होता है, और उसी के चलते वो खुद इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो मैम जुडिशियल रिव्यू होता है एनसीएलटी का? जुडिशियल रिव्यू में ये होता है कि दी कोर्ट बिल वैसे नहीं अवेलेबल है, लेकिन ओनली फॉर अ लिमिटेड पर्पस ऑफ ऑपरेशन क्रेडिटर्स ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स में आया है। एक बहुत ही फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ एसआर स्टील्स। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि दी इक्विटी दी इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स शुड बी बैलेंस्ड। फिर एक केस था स्विस रिबन्स का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिट्रेट किया कि दी रेजोल्यूशन प्रोसेस का पर्पस ये है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए। तो इन्हीं दोनों जजमेंट्स के बेसिस पे और उन पार्ट्स को रिलाय करते हुए एनसीएलटी ने जजमेंट दिया हेमॉन पावर के मैटर में। उसमें उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी इन दोनों मैटर्स में, तो इसलिए ये होल्ड किया जाता है कि अगर किसी भी केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को उनके ड्यू स्टेक्स नहीं मिल रहे अप टू दी शेयर ऑफ 1 करोड़, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट for judicial review, and the resolution court has got the power, NCLT has got the power to look into the matter as a judicial review, and they can send back the matter to the for revising the resolution plan. That's what has been held. बिल्कुल मैम, काफ़ी प्रिसाइज़ली आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस जो हैं, उनके आपने आंसर्स दिए हैं एंड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर की है रिगार्डिंग एनसीएलटी। सो मैम लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि रिव्यू अबाउट कानून गुरुज़। आप कानून गुरुज़ फैमिली से लंबे टाइम से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपके अकॉर्डिंग किस तरह से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, उनको हेल्प करते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें जो है कि नॉलेज को एनहांस करने का काम करती हैं? कानून गिरो इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज पहली बात तो ये है कि कानून गिरो को लॉयर्स को स्क्रूटनाइज करके उनको एनरोल करने का प्रोसेस है, काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ओनली दोज पीपल हु आर नॉलेजेबल, who have the efficiency and who have the updated knowledge, they can only be part of the Kanun Guru. And then secondly, they give you the enough digital appearance, digital space to showcase your legal skills and legal knowledge on their website, and they keep on sharing the good leads also with the lawyers. So it gives a very good boost to the lawyers, young lawyers, to help them in stabilizing them in the profession, because it's a very difficult profession. It is not easy to stabilize yourself as a lawyer in the profession. So if you have the clients to just apply your legal mind to the cases, then definitely it helps them to stabilize their legal career. बिल्कुल मैम, वी आर थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैम डेफिनेटली उन चीज़ों का आंसर देंगी एंड थैंक यू सो मच मैम। Surely. Thank you very much, Fidoz. It's been a pleasure to be on this live session. Thank you. I am थैंक यू मैम। open to answer any of the questions. Thank you very much.